some kind of combinations is there, कुछ combinations है, उसने बोल दिया, इसी टाइमिंग में बोला, कुछ 1-2 महीने पहले, whatever the time, कि new generations are like cockroaches. Now the cockroach, Mars in the Adra Nakshatra, Rahu, Peach. The second house is what? And it is in the Mercury sign. Now some Chief Justice told from Supreme Court of India, the new, now Mars Rahu is also connected with student protest. ऐसा होता है जो पूरा वर्ल्ड को, कुछ सीक्रेट है जो मैं बोल नहीं सकता हूँ ज्यादा, बट ये बोल सकता हूँ एक चीज, ज्यादा दिन तक इन फ्यूचर में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और कोई रहेगा, एंड आई हैव बीन टेलिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, तब जेंजीज लोग विल मिस. लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि ये हम हिंदू राष्ट्र बनाने के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बहुत बुरा होगा, सेक्युलरिज्म मर जाएगा वगैरह वगैरह. डू यू सी दिस हैपनिंग इन द फ्यूचर? नो, दैट टाइमिंग ना, इतना कुछ हो जाएगा ना ये टाइमिंग के अंदर, 2026, 2027 से 2034 तक. मुझे लगता है, एंड आई डोंट नो, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट रिजर्वेशन. मुझे लगता है, खुद लगता है कि रिजर्वेशन हटाना देना चाहिए. एजुकेशन रिफॉर्म्स जो है ये बैठ के भी इसके अंदर, Who is the next prime minister in your view? I don't see it as Yogi Ji, and a million people saying Yogi आएंगे. I am telling you very clearly, मुझको कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का मोदी के बाद, ये जो प्रोटेस्ट है is taking another direction. This protest, it's taking a very dangerous turn because the people who are supporting it, तो क्या ये CJP पार्टी जो है रहेगी? Namaste Atanu ji, welcome back. नमस्ते to you all, to your viewers. And I am glad you're with me again today. मैं बहुत खुश हूँ कि आप फिर से आए मेरे पॉडकास्ट पे. आज हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं. From an astrological point of view, we are going to look at the current situation जो दिल्ली में चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है, and that has to do with the जो protest चल रहे हैं, जो CJP फॉर्म हुआ है, और impacts, I suppose, to the current government from an astrological point of view. तो I guess मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि in the last month जो protests है वो बहुत intensify हो गए पूरे इंडिया में, particularly this last week. It has been crazy. Social unrest और law and order के incidents भी बहुत चल रहे हैं. तो अगर आप मेदिनी जोशी या मंडेन एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप ये फेज देखते हैं, तो ये फेज कैसा रहेगा, कितना क्रिटिकल है और किसके लिए क्रिटिकल है? See, I had predicted this before, प्रेडिक्ट किया था मैंने रील के अंदर, बिकॉज बहुत दिन पहले, क्योंकि when there वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं था इंडिया के अंदर, that kind of, this kind of at least. तो वो प्रोटेस्ट का टाइमिंग व्हेन मार्स का जो ट्रांजिट है, बिकॉज व्हेनेवर ना योर महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट गिव्स द क्लू even in individual chart or in country chart. Now the Mars is transiting from Aries to second house to third house to fourth house. It is transiting right now, and right now Mars is transiting over the natal Rahu of India. Okay, and Rahu is all about expansion, and Mars is the Agni Karak planet, or it's a fiery kind of planet. It's not always bad. Okay, now the thing is that when Mars and Rahu are combined in the India's ascendant, and Mars Rahu Mahadasha and Antardasha is transiting, it's a very easy it's a very easy kind of prediction that it gives some triggers. Now it is aspecting the 4th house of India from ascendant. It is aspecting the 7th house of India. It is also aspecting the 8th house of India. Okay. Now the thing is that Mars is in the 2nd house. It is in the Adra Nakshatra, right? So the 4th house is the masses, then the 7th house, the opponent things, the 8th house, the 8th house, a sudden change, any kind of sudden events. So these are the houses are connected. If you do not know any kind of other things which is connected with Mandan astrology, in an individual chart level also you can understand how the 4th house, 7th house and 8th house, then you can combine with the Mandan astrology perspective. Now when Mars and Rahu combined, so I had made a reel before,
where I told that a big kind of a dark era of Indian political history is coming. Dark era. Along with that, protest will be increasing in India, and it has been started. It has been started, and how it has been started, that is very interesting. That ये मैंने कोई रिल के अंदर नहीं बोला हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ. Second house is individual chart. Second house is speech, individual chart, and second house is also wealth. Okay, and you can take the Mandan perspective also. You can find in the Google what are the houses which is connected with the Mandan astrology: first house, second house, third house. Now, second house is connected with Rahu, Rahu, Mars in the Adra Nakshatra, Rahu, speech. The second house is what? And it is in the Mercury sign, right? Now, some Chief Justice told, okay, from Supreme Court of India, the new generations are like cockroaches. Now, Mars Rahu is also connected with cockroaches. Although he didn't mean that in that way. No, speech, because Gemini is connected. Na? Gemini is all about communications. The ascendant is all about communications. And second house is speech. Okay. Now, in individual's chart, in that person's chart also, I haven't seen it. In the Chief Justice chart, whoever chart, some kind of combinations is there. कुछ combinations है, उसने बोल दिया, इसी timing में बोला, कुछ 1-2 महीने पहले, whatever the time, new generations are like cockroaches. Now the cockroach is also the Mars and the Rahu. This is connected with the cockroaches. Okay. Now speech activated. The speech, your tongue activated. The second house. Whenever it activated the Mars and Rahu in the India's chart and the Adra Nakshatra. It activated the fourth house, the Mars. It activated the seventh house, the opponents. And seventh house is also war. So many things are connected with one house, but I'm just taking one. And it is also connected with eighth aspect. That means it is, in the transit is aspecting the eighth. That means Sagittarius. Sagittarius is what? It is connected with religion, dharma, higher institutions, higher institutions. That is why it is connected with higher institutions, medical, any, not the normal kind of examinations which happens in school or colleges. I am talking about the NEET kind of thing. So the overall, totally, when nothing is there, कोई movement नहीं था, तब वो उसने वो बोला, activate किया the Gemini ascendant, Mars Rahu आया. Before that, after the Mars Rahu transit कर रहा था, a party called पार्टी का नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी. Suddenly, without thinking, cockroaches with just adrenaline rush. Okay, activated Mars, Rahu, Adra Nakshatra, 4th house, 7th house, 8th house, Mahadasha, Antardasha, all activated. Along with that, Jupiter Athichari, which is also happening. Jupiter in the Cancer right now. Rahu Ketu transit. Along with that, some Uranus, Neptune, Pluto, and other Mandan parameters you can take. But the basic thing is there. Now, after that, what happens? The Mars will be transiting in the second house of India from this month end onwards. So the protest is going on. Now, what happened? The 10th house is the government authority. 10th house Rahu is transiting right now, and 4th house is connected with the Mars. What happened? New generation is also connected with Mercury. You can take the transit of Uranus, Neptune, Pluto also. Okay, the Gen Z periods you can take the reference. मैंने कुछ लिख के नहीं लाया आज, तो मैंने जस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू टैली विद द जनरेशन. जब यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का ट्रांजिट हुआ था लास्ट 50 और 60 इयर्स ऑफ ट्रांजिट, तो उन लोगों का मोटिव क्या है, व्हाट देयर मेंटालिटी. तो मर्क्यूरी इज कनेक्टेड, राहु इज ऑल्सो कनेक्टेड, सैटर्न इज ऑल्सो कनेक्टेड, बिकॉज इन जेनजी चार्ट जो है वो पाइसिस से शुरू होता है 96 97. तो उन लोगों का चार्ट के अंदर अभी सैटर्न रिटर्न हुआ है. एंड सैटर्न जब रिटर्न होता है ना कोई चार्ट के अंदर, मैच्योर बना देता है और ज्यादा, क्योंकि और एक तो साइकिल शुरू हो रहा है आपका. ओके, लाइक सैटर्न इज इन एरीज, so in your chart Saturn is coming in the Aries after 29 and 30 years. That means a second kind of things is starting. Okay, second cycle. Now वो भी start हुआ है Gen Z generation के अंदर,
आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया राइट नाउ. तो ऑल दिस थिंग, क्योंकि उन लोगों के अंदर थोड़ा मैच्योर्ड लेवल अभी आ गया है बिकॉज ऑफ द सैटर्न रिटर्न, कि हम लोग को कुछ करना है. नाउ ईच एंड एवरीथिंग हैज, जो होता है इंडिया के अंदर, कोई पार्टी हाईजैक कर लेता है, कोई एंटी नेशनलिस्ट हाईजैक कर, वो तो चलता रहता है, ठीक है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस आर द एक्टिवेटेड. बट ये जनरेशन के अंदर जो एक तो डिल्यूजन था ना, उससे ये लोग निकल के आ रहा है कंफर्ट जोन से. फर्स्ट टाइम दे कंफर्ट जोन से वो लोग निकल के आ रहे हैं एंड दे आर डूइंग समथिंग. किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज देयर जनरेशन इज लाइक दैट. किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बाद में उसको समझ में आएगा. लेकिन बट द थिंग इज दैट दीज आर द एक्टिवेशन थ्योरी. नाउ they activated. Now the thing is that reform will be coming in the education sector, which is very good. Both strict action already the government has been taken, and in future और भी अच्छा होगा. एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका टाइमिंग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द टाइमिंग इज नॉट गुड फॉर हिम. Do you think he's going to resign? बहुत दिनों तक मैं यही बोल सकता हूँ, बिकॉज कुछ सीक्रेट है जो मैं बोल नहीं सकता हूँ ज्यादा, बट ये बोल सकता हूँ एक चीज, ज्यादा दिन तक नहीं है. आप थोड़ा सीक्रेट बता दो. नहीं, सीक्रेट नहीं, वही बोल दिया मैंने. एजुकेशन मिनिस्टर जो ज्यादा दिन तक मुझको नहीं दिख रहा है. मैं प्रिसाइज प्रेडिक्शन में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया. Understood. Now, do you think, so you talk about these changes being good, these reforms being good, लेकिन ये जो protest है is taking another direction. Now hear me out. Modi has heard all these people, all these youngsters, all these, this youth generation as we call it. So he is acting on it. But this protest is actually taking a very illegal turn. It's taking a very political turn. It's taking a very dangerous turn because the people who are supporting it, जहां पे फंडिंग आ रही है और सुनाई भी दे रहा है, $1 million फेंक रहे हैं लोग, तो दैट इजंट एग्जैक्टली इन द नेशनल इंटरेस्ट. तो क्या ये सीजेपी पार्टी जो है रहेगी या फिर रहेगी? वो एक तो जगह कर लेगी. इन फ्यूचर में नाम उसका चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, सीजेपी से और कुछ नाम चेंज हो सकता है. बट द थिंग इज दैट कि ये पार्टी रहेगा फॉर यू इन फ्यूचर के लिए, और रजिस्टर्ड बनेगा. इन फ्यूचर में बन जाएगा. ऐसा नहीं कि अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है ना, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट. जस्ट उन लोगों ने बनाया है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आर देयर, एवरीथिंग. So what I'm telling you is right now कि so many external enemies are hijacking right now because they have got a real issue उसको hijack के लिए. That is why government is very sensitive right now, and government is taking the right decisions, and in future they will be taking the right decisions. But India के अंदर civil war आना है. I'm going to say, and I support the growth of the country. I follow the Chanakya principles, Chanakya Niti. And one of the biggest things that Chanakya actually says is that ultimately it's the king who holds the whole, is responsible for everyone. So technically the king is responsible for 1.4 billion individuals in India, right? I understand that there is, and I agree with the educational reforms, क्योंकि मेरे husband खुद इंडिया से है और उसने मुझे खुद बोला है कि it is really horrible, the education system needs to change. वो बार बार हम बात करते हैं ना, तब वो चर्चा होती ही है. So that is a good thing. लेकिन अभी तक किसी ने problems ही share नहीं किए हैं, not to a certain level with the prime minister. But I also agree with the fact कि अगर कोई कर सकता है तो मोदी ही कर सकते हैं. He is trying and he is addressing. He forgot for a moment, because he can watch any reels right now. He is the Prime Minister of India, and he can see what are the things are going on in the new generation, good and bad posters, very different, very bad kind of language. So many things are happening in the Gen Z generation, in the Instagram right now. But he is not thinking about all these things, ignoring. And he wants to connect with the new generations because he knows that they are the new generation. We have to connect.
So they are our children. So whatever they are, yeah. So he's responsible. So he is not thinking about the ego. He always thinks about the country. That is why he is coming in the Instagram last 2 days and wants to interact with their language so that he can understand them more and connect. And he is giving the instruction to the cabinet ministers, engage raho Instagram के अंदर what they want, because they know they are the new generation. Whatever they are good or bad they are doing, so we have to show them the right path. And जो नेगेटिव जो एक तो एनवायरनमेंट है, जो हाईजैकर्स है, ओपोनेंट पार्टीज है और इंडिया का जो एनिमी है, वो लोग इसको हाईजैक मत कर ले, हम लोग इसको अच्छा रास्ता दिखाए, चाहे वो रॉन्ग अच्छे साइड में हो, ठीक साइड में हो, भूल साइड में हो, वॉट एवर द मैटर इज, बिकॉज दे आर द जनरेशन. We will someday we will fall. Someday we will fall, but we have to show them the right, because he wants to connect. That is why he is staying for a longer time as a PM in India. That is the reason behind. He is not like others. I'm going to ask you then a very different question. If you look at the foundations of CJP, the three individuals who are right at the top, who claim that they're, and I suppose they are talking with the government and they're trying to negotiate resignations and so on and so forth. It starts from that core. The bad words that are being used, the horrible language, the horrible treatment to police, the horrible treatment to people starts from there. I'm going to go back to the grassroots level. And unfortunately, this doesn't start at the Gen Z. I am a mother today. And when I see all this, I feel it starts with me as a mother. I do not accept that these three individuals at the top are actually speaking in this way. It is not giving all this good work that they're trying to do a good direction. In fact, it is the worst form of communication, worst way of communicating with people. To swear at your own policeman, to swear at the different generations, to then put on a pedestal these parties who, all of them, in some way are linked to some scandal, scams. I don't know what parties are going there. I'm not quoting any parties. So please don't come to me and write, I am an unpakt. Maybe I am. Actually, I am. And I don't regret it. I'm not a... But the point I'm trying to make is this is actually washing out the good work they're doing, the lies that they're saying. I would actually like to point to them that you are going in the right direction for reforms, but you're doing this in a very horrible and disgusting way. That's true. That's true. But you have to think also that the new generations is also coming from the old generations, right? But that's what I'm saying. It starts with us now. Start the generation, and the new generations, although they are the future, no? So that is. But this education reform, right? Like I said, we've got to look at grassroots. I agree that the education system needs a massive reform, right? We have rules and laws that go back 100 years. This education system was built by the British, when you think about it, and tried to be modified through the industrial age to suit the British, and has been tried to be modified by Congress, right? These NEET papers actually were started in the Congress era and government. Let's not forget that. And we have to fix this from the grassroots level. So to demand a resignation isn't going to fix all that. It takes years, 100 years of undoing constitutional changes. And we are barking from the top of the roof. कि प्रधान का resignation चाहिए. यार सोचो तो जरा, थोड़ा सोच लो भाई. Because the resignation is not the only the way. The main problem is that you have to change so many things inside, and we have to connect it with our culture also. We have to connect it with our culture also. New generations, new innovations, along with the root level structure. Okay, along with our cultures and also
it's all about to change the internal structure. It's not about a resignation, because the system is the main thing, na? And you feel astrologically that this system is now going to change. Yes, because astrologically, now whatever you are speaking about or whatever I am telling, it's not. It is all about what is happening. But astrologically, or if the divine power wants to change something, wants to refine, rejuvenate something else, then some kind of protest always comes, no? This kind of protest, whether they want, whether that generation is good or bad, that's not my way of thinking. It's a new generation, so we need that generation. We cannot say that ये generation खराब है, ये generation अच्छा है, इसको ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री वैसे नहीं सोचता है, इसलिए वो इंस्टाग्राम में चला है. You're right. And it's not only that, you actually make a very valid point कि उसने उसका ईगो साइड में छोड़ा, क्योंकि उसको बहुत गाली लोग दे रहे हैं फॉर नो रीजन. वो एक्चुअली वो एजुकेशन में गाली, होर्डिंग में, पोस्टर्स में बहुत खराब चीज चल रहा है. Exactly. And he's put that all aside to come and speak to 1.4 billion people. एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा ना इन फ्यूचर में, which I predicted also, इन फ्यूचर में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और कोई रहेगा, the coming situation is critical and I have been telling for a longer time, तब Gen Z's लोग will miss this person. Of course. Because ये बोलेगा कि ये आया था, एटलीस्ट ये तो आया था, बोला भी था. I'm going to tell you something. This guy, no matter what anybody says, he's not normal human being. He is like a godsend. मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे वो जब I understand that his focus has been too international, वो बहुत ट्रैवल करते हैं, but let me tell you why today. अभी ऑस्ट्रेलिया का बजट निकला है और उसमें हमें पता चला, जब हम डिबेट करते हैं ना बजट की कि ये बजट में आपने इतना क्यों लिखा हुआ है, हमको तब पता चला कि he has negotiated 25 million Australian dollars with the Australian government, जो मेरे वेजिस से निकलने वाले, जो हर ऑजी के वेजिस से निकलने वाले हैं, for India's renewable energy project. पता है मेरी, I swear to you, I was so angry कि ये बंदा ऐसे कर रहा, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि आपके देश को कितना बेनिफिट है. तो वो तो नहीं देखता है ना, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लाइंड, मतलब आप देख पा रहे हो लेकिन वो लोग नहीं देख पा रहे हैं ठीक तरीके से, कि ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. एक सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम, इंडिया इज अ बिग कंट्री, यू नो, डिफरेंट कल्चर्स, different languages, different, so many different colors, but different nature is also different from from north to south, east to west. So many things to control this country totally in a peaceful way. It's very tough. लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि ये हम हिंदू राष्ट्र बनाने के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बहुत बुरा होगा, सेक्युलरिज्म मर जाएगा, वगैरह वगैरह. Do you see this happening in the future? Yeah, I predicted in it. 2035. Okay, but what about secularism? Will we use that? No, that timing ना इतना कुछ हो जाएगा ना ये टाइमिंग के अंदर, 2026, 2027 से 2034 तक एक कॉन्शियसनेस का राइज होगा, डिफरेंट कॉन्शियसनेस. हिंदू राष्ट्र, क्रिश्चियन भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सब रहेगा, बट ऐसा इंडिया नहीं होगा वो फ्यूचर का, 2035 का है. लोग का कॉन्शियसनेस चलाएगा. और न्यू जनरेशन जो है वो 10 years हो गया ना अभी से, अभी 20, अगर न्यू जनरेशन का भी 28-29 है तो 10 years मतलब 40 के करीब चला गया ना, नियर अबाउट 40. तो वो तो और एक तो जनरेशन चलाया, दैट मीन्स विद इन कमिंग 10 years. And along with all this kind of wars, civil rights, then supply management problem, then so many negative things will be happening throughout 2027 to 2034 and 32. कि एक तो different consciousness rise होगा, and that is a different dimension for the human civilization, not only for India. तो इंडिया तो चेंज होगा ना. हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए?
वाई समझ में आएगा तब। तो दैट इज अ डिफरेंट एरा, टोटली अ डिफरेंट एरा। एंड एक तो चीज है कि मैं कभी भी न्यू जनरेशन का अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर। वाई? बिकॉज एक उम्र रहता है, एक एज रहता है जिसमें हॉर्मोन्स एंड एड्रेनलिन रश रहता है। उसी टाइमिंग में बहुत कुछ वो लोग करता है, बाद में उसको चेंज होता है। तो यू कैनॉट ब्लेम द न्यू जनरेशन, but you can blame those who are hijacking any kind of movement to destabilize India. You can blame them. Oh, I absolutely do. I do. Because I am against the fact that these people are actually stopping India's growth by hijacking a movement, a pure movement for the education reforms. मुझे लगता है, and I don't know, I've heard a lot about reservation. मुझे लगता है, खुद लगता है कि reservation हटाना देना चाहिए. एजुकेशन रिफॉर्म्स जो है ये बैठ के भी विद, देखो इसके अंदर बहुत पॉइंट्स रहेगा उसके अंदर, व्हाट यू वांट टू टॉक विद द गवर्नमेंट, व्हाट यू वांट। एंड उसके लिए ना नरेंद्र मोदी ने आया है इंस्टाग्राम में, वो बोला है कि हर एक हफ्ते में एक बार आऊंगा, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को बोला है ट्राई टू कम्युनिकेट विद द न्यू जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम। तो वो जानना चाहता है कि ये लोगों के अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन है और क्या फ्रस्ट्रेशन है, नॉट ओनली दिस, क्योंकि वो लोगों का फ्रस्ट्रेशन ही बाहर का लोग हाईजैक करके, यूज करके, फंडिंग करके एक मूवमेंट बना देता है। So he wants to know the frustration of the new generation, not only about the paper leak. I remember one reel where he said, and he's openly said it, कि कोई मुझे कुछ बताता भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई कर सकता है तो सब ऑपोजिशन सब जानते हैं कि अगर कोई करेगा तो मोदी ही करेगा। तो in that sense, I am glad that the youth, the younger generation, have spoken up. I'm actually very glad. Because yes, that's not only the only reform. I also think the legal system needs to change. It's quite old, and that is going to take a lot of time, because that's 100 years of policies and changes. Your law should be it should be very much strict, so that जब भी तुम सोचो तो तुम्हारा नाइटमेयर चला है. Your law should be very much strict. Correct, but the law should also be strict for these individuals too. Yes, true. Okay. उसका cleansing era is coming. The cleansing era. I'm not cleansing era of the anti-nationalist inside India. That era is coming. That is why I predicted about the civil war. वो 2027 से आ रहा है. Because whenever different kind of bills will be passed, different kind of bills, and to only मतलब सफाई करने के लिए जो एंटी नेशनल इनसाइड इंडिया में है, तो उस टाइमिंग में मूवमेंट तो फिर बढ़ेगा. और इस साल भी नॉट ओनली दिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और भी प्रोटेस्ट होने वाला है. नेक्स्ट ईयर से और भी प्रोटेस्ट होगा, बिल भी पास होगा. जो बिल रुका हुआ है अभी भी वुमेन्स एम्पावरमेंट बिल, देन सो मेनी अदर बिल्स आर देयर. तो वो बिल पास होगा और भी मूवमेंट इन फ्यूचर में आने वाला है. तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है अलोंग विद द थर्ड वर्ल्ड वॉर और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो है, प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए, जो है जो इस ईयर का एंड से आने वाला है एंड 2032 तक चलेगा. इंडिया विल बी ऑल्सो अफेक्टेड. बट इंडिया के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर एंड अदर थिंग्स, वो है सिविल राइट एंड सिविल वॉर. ये आने वाला है. मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये सिविल और रायट्स और हम जो बात करें, to what extent are we going to see this? Are we going to see this where religions versus religions, yeah? Or is it going to be? No, religions will be there. That is the religions versus religion, it will be there. Now, I'm not taking the name of the religions, but religions versus religions, along with so many other issues, not only religions. इंडिया में जो चलता है ना, एक दो रिलीजन्स की प्रॉब्लम ज्यादा चलता है, वो तो होगा. Along with that, other issues will be also involved. Are there so many issues, and this will be very brutal, and that is why I predicted after 2027. After 2027, the military rule will be coming over here, strict rule, and military after 2027 military rule. Yogi Adityanath's chart is favorable, going towards favorable, and I'm not predicting he is going to be the coming next prime minister, but his chart is vibrating with more defense ministry,
एंड इन फ्यूचर में 2028 2029 में डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का पीरियड है। तो इन फ्यूचर में नरेंद्र मोदी, ठीक है उसका 2027 एंड मैंने बोला, लेकिन वो और कोई पोजीशन में रहेगा, अच्छा पोजीशन में रहेगा इनसाइड बीजेपी, ओके। बट द डिफेंस मिनिस्ट्री शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इंडिया के अंदर ये सिविल राइट हो या वर्ल्ड वॉर सिचुएशन हो, इसके अंदर 2027 के बाद एक तो मिलिट्री रूल आना है। एंड 2027 में मैं जो इलेक्शन है वो मैं नहीं दिख रहा हूँ। बहुत सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स आर प्रेडिक्टिंग अबाउट 2029 इलेक्शन इन इंडिया, बट मुझको नहीं दिख रहा है 2029 में इलेक्शन हो रहा है। So that's what I was coming to. I was actually going to ask you, is Modi still going to be the prime minister until 2029 when the next election comes? But you just said you can't see the next election. 2027 is the last year of Modi. But is that on his account? It's the last year, or is that the public's account? No, वो ही खुद लेगा डिसीजन। He'll have had enough, I guess. Planetary conditions, circumstances, so many things will be there. So he'll be taking, मतलब खुद का रेस्पेक्ट खुद करेगा ना, वही व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसी तरीके से वो और कोई आएगा, ठीक है, लेकिन 2029 में मुझको नहीं दिखता है कि कोई इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, बिकॉज दैट इज अ वेरी dangerous period for the world. I'm going to ask you then, who is the next prime minister in your view? I don't see it as Yogi ji and a million people saying, oh, Yogi aayenge. I agree that Yogi ji is probably defense. He'll be really good in that defense space. But I'm telling you very clearly, मुझको कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का मोदी के बाद नहीं दिख रहा है, ओके। आई एम टेलिंग यू, हाँ, बिकॉज द इंडिया एंड द वर्ल्ड विल बी गोइंग थ्रू अ वेरी टफ पीरियड। मुझको डिफेंस मिनिस्ट्री में जो दिख रहा है और मिलिट्री रूल दिख रहा है इंडिया के अंदर, अब ये अगर दिख रहा है मुझको, तो मुझको प्राइम मिनिस्टर कैसे दिखेगा? चाहे कोई 6 महीने के लिए चला है, जैसे हुआ है इंडिया के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, कोई 6 महीने के लिए हुआ है, कोई 1 साल के लिए हुआ है, ऐसा हुआ है। तो वो एक तो जो फेज है ना, मैंने ईयर भूल गया, बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है इंडिया का एक टाइमिंग में, विद इन 2 to 3 years। वो टाइमिंग फिर रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न। और मोदी जी नहीं रह रहा है। 2029 में मुझको इलेक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट ईयर में पंजाब इलेक्शन है, और जो इलेक्शन यूपी का इलेक्शन है उसमें बीजेपी जीत जाएगा, ठीक है। वो योगी आदित्यनाथ जो है, आफ्टर जो जीत जाएगा, वो जब उसके बाद उसको अच्छा पोजीशन कुछ मिलेगा सेंट्रल में। लेकिन आफ्टर मोदी मुझको स्टेबल कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नहीं दिख रहा है। मुझको दिख रहा है मिलिट्री रूल एंड डिफेंस मिनिस्ट्री में जो रहेगा वो ही इंडिया को आगे लेके जाएगा। Okay, I'm going to ask you a different question then. बीजेपी तो पावर में रहेगी ना? हाँ, बीजेपी रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम। तो बीजेपी रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी रूल होगा और योगी आदित्यनाथ विल प्रोबब्ली बी लीडिंग इट फ्रॉम अ डिफेंस साइड। हाँ, आई हैव टू टेल यू एस्ट्रोलॉजिकली ना, मतलब मुझको लॉजिकली देखना नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो रहा है उसी सिचुएशन में देखना है ना, मैं जैसे प्रेडिक्ट करता हूँ। इसलिए कुछ और लगेगा आपको सुनने में, बट इट इज ट्रू। एंड 2030 तक इंडिया में एक ही पार्टी हो जाएगा। कांग्रेस भूल जाइए, एएपी भूल जाइए, और जितना सारा पार्टी नहीं, कुछ नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। वन पार्टी वन पॉलिटिकल फिगर, दैट्स ऑल। Okay, this is very interesting. And on that note, have I missed anything before I close this podcast? ये मैं एक ही तो चीज बोल रहा हूँ कि न्यू जनरेशन, जो फर्स्ट वाला जो आज का पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट था अबाउट द स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन्स को कभी इग्नोर करना नहीं चाहिए, एकदम इग्नोर नहीं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऐसा होता है जो पूरा वर्ल्ड को हिला देता है, अगर वो सही मुद्दे में हो, सही कोई टॉपिक के ऊपर हो, ठीक है। तो न्यू जनरेशन्स जो है वो लोगों का राइट रास्ता दिखाने का, मतलब people should show them the right path, that's all. So whatever they are doing to reform the Indian education system, जो ठीक है, लेकिन apart from that, मैं जो पॉजिटिव पार्ट है ना उसको लेके बात कर रहा हूँ, हाँ, नॉट द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट एवरीबडी नोज, हाईजैकिंग, फंडिंग, सो मेनी थिंग्स। बट जो न्यू जनरेशन्स है उसको लेके ही आगे चलना है, बिकॉज दे आर द न्यू जनरेशन्स। ओल्डर जनरेशन विल बी ओल्ड, मोर ओल्ड इन फ्यूचर, तो न्यू जनरेशन आगे लेके जाएगा। सो दैट इज वाई आई एम थिंकिंग अबाउट कि ये न्यू जनरेशन का जो मूवमेंट हुआ है, ये लोगों का कॉन्शियसनेस थोड़ा हाई होगा इन फ्यूचर के अंदर, कमिंग 5 to 6 years, एंड दे वांट
कि वो लोग इंडिया को रिफॉर्म करेगा, नॉट ओनली बीजेपी। इन फ्यूचर में दो पार्टी रहेगा, एक है न्यू जनरेशन और एक है बीजेपी। अंडरस्टूड? ये दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बोला। तो आप तो बोल रहे हैं मुझे सीजेपी शायद पावर में होगी विद अ डिफरेंट नेम। डिफरेंट नेम, न्यू जनरेशन एक तो पार्टी रहेगा इंडिया के अंदर। क्योंकि भगवान को अगर इंडिया को सुधरना है तो न्यू जनरेशन को पहले रेस्पॉन्सिबल बनाना है, तो वो रेस्पॉन्सिबल बना रहा है अभी से रेस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कि तुम लोग वो सब के अंदर मत रहो, ज्यादा रहो इंस्टाग्राम में, नेटफ्लिक्स में, सब जगह में रहो, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन कंट्री। तो वो लोग शुरू हुआ है वो जर्नी। तो बीजेपी रहेगा, न्यू जनरेशन रहेगा, ये दो चीज रहेगा, बाकी और कोई नहीं रहेगा। That's fair enough. Let's close on that note. I appreciate your time, your astrological view. Sometimes shocking, but I guess we have to accept that perhaps, this is correct. You're right in the direction it's going. So I want to thank you, Atanu Basuji. Welcome and thank you. नमस्कार। Namaskar.